अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हिडन ट्रेड, इसका मतलब होता है दोस्तों खुफिया या पोशीदा तिजारत। हिडन कहते हैं छुपा हुआ, खुफिया या पोशीदा। ट्रेड कहते हैं तिजारत को। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Hidden trade refers to illegal or unregulated commercial activities that occur without government oversight or taxation. Hidden trade यानी खुफिया या पोशीदा तिजारत, रेफर्स टू मतलब जाहिर करती है या से मुराद है, इलीगल कहते हैं गैर कानूनी, और या अनरेगुलेटेड इसका मतलब होता है दोस्तों गैर मुनज़्ज़म। अनरेगुलेटेड यानी गैर मुनज़्ज़म। कमर्शियल मतलब तिजारती, एक्टिविटीज़ कहते हैं सरगर्मियों को। दैट जो या जो के, अक्कर मतलब वाक़या होती हैं या होती हैं, विदाउट के बग़ैर, गवर्नमेंट ओवरसाइट, गवर्नमेंट मतलब हुकूमत या हुकूमत के बग़ैर, विदाउट गवर्नमेंट यानी हुकूमत के बग़ैर, ओवरसाइट का मतलब होता है दोस्तों निगरानी करना, देखना, और या टैक्सेशन इसका मतलब होता है दोस्तों टैक्स के बग़ैर। Hidden trade refers to illegal or unregulated commercial activities. पोशीदा तिजारत गैर कानूनी या गैर मुनज़्ज़म तिजारती सरगर्मियों को जाहिर करती है। That occur without government oversight or taxation, जो हुकूमती निगरानी या टैक्स के बगैर होती हैं। This includes smuggling, black market transactions and tax evasion. दिस इंक्लूड्स मतलब इसमें शामिल है या इसमें शामिल होता है। स्मगलिंग मतलब स्मगलिंग करना। ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन, ब्लैक मार्केट यानी ब्लैक मार्केट, ट्रांजैक्शन कहते हैं दोस्तों सौदेबाजी करने को या लेन देन को। एंड और टैक्स एवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी या टैक्स चोरी करना। दिस इंक्लूड्स स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस एंड टैक्स एवेजन। इसमें स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट की लेन देन और टैक्स चोरी शामिल हैं। सच प्रैक्टिसेस हार्म द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड क्रिएटिंग, सच मतलब ऐसे, प्रैक्टिसेस कहते हैं तरीकों को, अमल को, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाते हैं। इकोनॉमी यानी मईशत को, इकोनॉमी का मतलब होता है मईशत, बाय मतलब से या करके या करने से, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, बाय रिड्यूसिंग मतलब कम करके या कम करने से। गवर्नमेंट रेवेन्यू इसका मतलब होता है दोस्तों हुकूमती रेवेन्यू यानी हुकूमती आमदनी को। एंड और क्रिएटिंग मतलब पैदा करना। अनफेयर कंपटीशन फॉर लीगल बिजनेसेस, अनफेयर मतलब गैर मुनसफाना, कंपटीशन का मतलब होता है दोस्तों मुकाबला या मुसाबकत, फॉर मतलब के लिए, फॉर अनफेयर कंपटीशन यानी गैर मुनसफाना मुसाबकत या मुकाबले, फॉर लीगल बिजनेसेस यानी कानूनी कारोबारों के लिए, लीगल कहते हैं कानूनी, इलीगल गैर कानूनी, बिजनेसेस यानी कारोबारों को कहते हैं। Such practices harm the economy by reducing government revenue and creating unfair competition for legal businesses. इस तरह के अमल या इस तरह के तर्ज़ अमल हुकूमत की आमदनी को कम करके और कानूनी कारोबारों के लिए गैर मुनसफाना मुसाबकत पैदा करके मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं। Hidden trade often involves dangerous goods like drugs or weapons which threaten public safety. Hidden trade यानी पोशीदा या खुफिया तिजारत, ऑफन इन्वॉल्व्स अक्सर शामिल होती है या अक्सर इन्वॉल्व होती है। डेंजरस गुड्स यानी ख़तरनाक अशिया को कहते हैं। डेंजरस मतलब ख़तरनाक, गुड्स मतलब अशिया या सामान, लाइक जैसे, ड्रग्स मतलब मंशियात, और वेपन्स या असला या हथियार। विच थ्रेटन पब्लिक सेफ्टी, विच थ्रेटन मतलब जो ख़तरे में डालती है या ख़तरा पैदा करती है आप कह सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी यानी अवामी हिफाजत को या अवामी तहफ़्फ़ुज़ को। हिडन ट्रेड ऑफन इन्वॉल्व्स डेंजरस गुड्स लाइक ड्रग्स और वेपन्स विच थ्रेटन पब्लिक सेफ्टी। पोशीदा तिजारत में अक्सर ख़तरनाक अशिया जैसे मंशियात या हथियार शामिल होते हैं जिससे अवामी तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा होता है। इट कैन आल्सो लीड टू करप्शन एंड वीकन ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। इट कैन आल्सो लीड टू मतलब ये भी बाइस बन सकता है, वजह बन सकता है, सबब पैदा कर सकता है,
کرپشن کہتے ہیں دوستوں بدعنوانی کو، یعنی بدعنوانی کا. اینڈ ویکن ٹرسٹ، اور اعتماد کو کمزور کر سکتا ہے. ویکن مطلب کمزور کرنا، ٹرسٹ کہتے ہیں اعتماد کو. ان انسٹیٹیوشنز یعنی اداروں پر یا اداروں میں، انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں دوستوں اداروں کو. it can also lead to corruption and weaken trust in institutions. یہ بدعنوانی کا باعث بھی بن سکتا ہے اور اداروں پر اعتماد کو بھی کمزور کر سکتا ہے. Governments combat hidden trade by enforcing strict laws, improving border. Governments مطلب حکومتیں، combat کا مطلب ہوتا ہے دوستوں نمٹنا، قابو پانا، مقابلہ کرنا. hidden trade یعنی خفیہ تجارت کا. by enforcing strict law یعنی enforcing مطلب دوستوں نافذ کرنا. by enforcing یعنی نافذ کر کے. strict laws یعنی سخت قوانین. by enforcing strict laws یعنی سخت قوانین نافذ کر کے. improving مطلب بہتر کرنا یا بہتر بنا کر. border یعنی سرحد، border کہتے ہیں سرحد کو، یہ سرحدی. security یعنی تحفظات کو. and encouraging people to report illegal activities. and encouraging اور ترغیب دینا یا ترغیب دے کر. people یعنی لوگوں کو، to report مطلب اطلاع دینا، رپورٹ کرنا. illegal activities یعنی غیر قانونی سرگرمیوں کی، یا غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں بتانا. Governments combat hidden trade by enforcing strict laws. حکومتیں پوشیدہ تجارت کا مقابلہ سخت قوانین نافذ کر کے. improving border security سرحدی تحفظ کو بہتر بنا کر. and encouraging people to report illegal activities اور لوگوں کو غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع دینے کی ترغیب دے کر کرتی ہیں. raising awareness about the negative impacts of hidden trade is essential for building a transparent and fair economy. raising awareness یعنی آگاہی پیدا کرنا، بیداری پیدا کرنا. raising مطلب پیدا کرنا، awareness کہتے ہیں آگاہی کو، بیداری کو. about کے بارے میں. negative impacts یعنی منفی اثرات کے بارے میں. of hidden trade یعنی پوشیدہ تجارت کے. is essential ضروری ہے. for building مطلب تعمیر کے لیے. a transparent یعنی ایک شفاف، transparent کہتے ہیں شفاف کو. ٹرانسپیرنٹ مطلب ایک شفاف. اینڈ فیئر اکانومی، فیئر مطلب منصفانہ، اکانومی کہتے ہیں معیشت کو. اینڈ فیئر اکانومی اور منصفانہ معیشت. raising awareness about the negative impacts of hidden trade is essential for building a transparent and fair economy. پوشیدہ تجارت کے منفی اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ایک شفاف اور منصفانہ معیشت کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.